हमने वेज सोयाबीन पुलाव बनाने के लिए 2 टमाटर कटे हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट बारीक कटा हुआ, 2 लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च, 4 प्याज, सोयाबीन बड़ी उबाल के निचोड़ी हुई, आलू और बटर। कुकर में 1 तेल डालना है, फिर फ्राई करके जब तक फ्राई करना है। फ्राई अच्छे तरीके से तल चुकी है, इसमें जीरा डालेंगे, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर 2 मिनट तक वापस से पकाएं। मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया।